फ्रॉम जनवरी लास्ट वीक से स्टार्ट होके आज के डेट तक वी हैव सो मेनी गुड न्यूज़ेस, वी हैव सो मेनी बुलिश अपडेट्स फॉर बिटकॉइन एंड फॉर द एंटायर क्रिप्टो करेंसी मार्केट. मैं गिन के खत्म नहीं कर सकता. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मार्केट. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मार्केट एंड आई होप न्यूज जैसा बुलिश है मार्केट भी वैसे ही बुलिशली बिहेव करेगा इन कमिंग डेज. सो क्या लगता है, इज दिस द राइट टाइम टू गो 100%? इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट 100% ऑन बिटकॉइन ऑन क्रिप्टो करेंसी मार्केट? चलो देख लेते हैं आज के इस वीडियो में. सो स्टिक टू दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में. तो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज देव. वेलकम बैक टू बिटबोल. So before I go forward, let's hit the like button and subscribe this channel if you haven't subscribed it yet. उससे पहले मुझे बोलो अभी तक क्यों सब्सक्राइब नहीं किए हो. Anyway, let's get into today's topic. Before wasting any more time, let's get rolling. So before I recall all those good news जिसका इफेक्ट मार्केट में बहुत जल्द हम लोगों को दिख सकता है, उससे पहले लेट्स लुक इनटू दिस मार्केट स्ट्रक्चर. लेट्स लुक इनटू दिस बिटकॉइन चार्ट कि चार्ट क्या बोल रहा है. सो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट सबसे पहले टेक्निकलिटी देखो, उसके बाद मार्केट को जज करेंगे. सो सबसे पहले बिटकॉइन का जो रिसेंट स्ट्रक्चर है, जो लास्ट एक हफ्ते से एक स्ट्रक्चर को हम हर एक दिन फॉलो अप कर रहे हैं, विच इज दिस असेंडिंग ट्रायंगल. एंड हैप्पी टू announce that still now this ascending triangle exactly successfully breakout हो रहा है, but still it will be worth waiting for a confirmation breakout, a volume breakout जो कि अभी तक still now नहीं दिखाई दिया है. So now if I zoom out, one thing which is making me excited that finally we are out of this downward slope, downward trend line, but still let me highlight this downward trend line, this yellow color ka line. We are just right out of this downward trend line, but afsos ki the daily candle according to this 1st February, the daily candle which is still not showing any strength, but we are out of this candle. But the only thing which I want for my confirmation is a big volume breakout, or at least closing this daily candle above this trend line. So now अगर डेली वॉल्यूम का बात करें स्पेसिफिकली, स्टार्टेड फ्रॉम 24th of Jan से लेके आज तक का जो वॉल्यूम है, ऐसे दिखाई दे रहा है कि डेली एक ग्रेजुअल डिक्लाइनिंग मोड पे है. एंड एट द सेम टाइम दिस वॉल्यूम इज नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर बिटकॉइन का ब्रेकआउट. सो फॉर बिटकॉइन का एक कंफर्मेशन ब्रेकआउट के लिए वी नीड अ बिग वॉल्यूम कैंडल इन दिस रेंज एंड वी नीड अ बिग ग्रीन इनगोल्फिंग कैंडल अबव दिस रेजिस्टेंस लाइन, जो कि आज तक का रेजिस्टेंस था. इसको अगर सपोर्ट में चेंज करना है, वी नीड अ बिग वॉल्यूम ग्रीन कैंडल लाइक दिस रेड कैंडल. वी नीड अ बिग वॉल्यूम ग्रीन कैंडल जस्ट अबव दिस ट्रेंड लाइन. एंड साथ ही साथ वन थिंग वी शुड नॉट फॉरगेट, कितना भी ब्रेकआउट मिल जाए हम लोगों को ये डाउनवर्ड स्लोप से, दिस ट्रेंड लाइन अभी का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लाइन है अराउंड $40,000, ये वाला लाइन को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा. जितना ही ब्रेकआउट मिल जाए, जब तक ना बिटकॉइन का प्राइस 41,000 42,000 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज हो रहा है, तब तक एवरीथिंग इज अनस्टेबल. कुछ भी परमानेंटली नहीं बोल सकता है जब तक ना वी आर गेटिंग अ गुड बिग एनगोल्फिंग कैंडल अबव दिस $40,000 रेजिस्टेंस लाइन. सो इतना तक तो था टेक्निकल एनालिसिस. नाउ व्हाट ऑल वी हैव इन फंडामेंटल्स. फंडामेंटल्स में जितना भी न्यूज है, ईच एंड एवरी न्यूज इज हाईली बुलिश फॉर एंटायर मार्केट. सो फाइनली थाईलैंड ने भी ऑन 31st of January अपना क्रिप्टो करेंसी टैक्सेस के अनाउंसमेंट कर चुका है, बट दे आर ओनली चार्जिंग 15% ऑन कैपिटल गेन. लाइक इंडिया इज चार्जिंग 30%, कंपेयर टू इंडिया थाईलैंड इज चार्जिंग जस्ट 15% on capital gain. Now on the other hand we have a huge news from El Salvador. तो ऐसे बोल सकते हैं El Salvador is following our पुष्पा, like अपन झुकेगा नहीं साला. तो El Salvador ने IMF ने जो भी डायरेक्शन दिया था, जो भी ऑर्डर दिया था, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो भी इन लोगों को डायरेक्शन दिया था, which is IMF ने ये ऑर्डर दिया था El Salvador को कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर से हटा देने का. So finally on 31st of January El सल्वाडोर ने आईएमएफ का ये ऑर्डर डिक्लाइन किया है. उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया है एंड दे आर गोइंग टू कीप अप विद देयर प्रॉमिस. दे आर गोइंग टू कीप बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर इन देयर
country. So now अगर एल सल्वाडोर ने अपना ऐसे ही काम जारी रखा तो मे बी इन कमिंग डेज अर्जेंटीना, ब्राजील और जितना भी लैटिन अमेरिका का छोटे इकोनॉमी वाला देश है, जितना भी पुअर कंट्रीज है, दे विल ऑल जॉइन हैंड्स विथ एल सल्वाडोर एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज मूवमेंट फॉर बिटकॉइन. तो साथ ही साथ एज वी ऑल नो रशिया ने भी अपना मूड चेंज कर लिया है. रशिया भी ये डिसाइड किया है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लाने वाला है. बट वन थिंग आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू प्रॉमिस योरसेल्फ, ओके? मुझे कुछ प्रॉमिस नहीं करना है. अगर रशिया कल को आगे फिर से बोला कि बैन कर देगा, चाइना ने फिर से आके कल कुछ बोला कि बैन कर देगा, दिस शुड नॉट बी अफेक्टिंग योर पोर्टफोलियो, क्योंकि यू नो दैट इंडिया में अभी इट्स नाउ लीगल. एल सल्वाडोर इज द डैड. थाईलैंड में नाउ इट्स लीगल. ऐसा बहुत सारे कंट्रीज इन 2022 में आने वाला है जो कि टैक्स लगाने वाला है. ऐसे बहुत सारे छोटे कंट्रीज होगा जो बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर डिक्लेयर करने वाला है. लाइक यूएस में टेक्सास, एरिजोना, ऐसे बहुत सारे छोटे स्टेट्स, ऐसे बहुत सारे छोटे कंट्रीज बिटकॉइन को लीगल टेंडर अनाउंस करने वाला है. सो एनीवे बिटकॉइन का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस. बिटकॉइन इज ऑन द राइट पाथ. आज नहीं तो कल बिटकॉइन विल गो टू 1 million per coin. So that's it from my side, guys. Enjoy every moment. Be proud of a Bitcoin holder, a Bitcoin investor. We are the rare case, guys. We are the rare case. So enjoy this news. Make sure you are liking this video, subscribing this channel, and share this video with your friends and family. And we have all Twitter and Telegram waiting for all of you guys. Be a part of our small community. You will get all these links down in the video description. Go down below. Be a part of our channel. Be a guest. So wait for my next update. Till then, take care. Dave signing off.